guys, welcome back to my channel. So here today we'll be speaking about gastric carcinoma. So gastric carcinoma is a carcinoma that is happening in the stomach. So it's a multifactorial disease, okay, and in the 90% of the cases it's sporadic and 10% of the cases it's familial or hereditary. So what does this sporadic mean? That means it will be what we say unknown in, or like what we say not commonly found, and it's not related to something hereditary, okay, and 10% केसेस में फैमिली के साथ रिलेटेड होगा. तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, पहले तो आप लोग इसे बेसिकली 6 कैटेगरीज में याद रख लो. गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, गैस्ट्रिक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, gastric adenosquamous carcinoma, gastric undifferentiated carcinoma, gastroblastoma, and gastroneuroendocrine tumors. So how you're gonna remember this? So stomach में there are so many glands. So the carcinoma of that glands is referred to as gastric adenocarcinoma. And then if what do we say, if there is certain metaplasia in the lining epithelium of the stomach, so you can see squamous cell carcinoma, gastric squamous cell carcinoma, and जब दोनों ही combined होंगे तो gastric adenosquamous carcinoma. And then carcinoma जब you are not able to tell which cell it is, whether it is squamous cell or a gland, you can't tell it, so it is gastric undifferentiated carcinoma, okay. Then blastoma is something happening in the children, okay. And then gastric neuroendocrine neoplasms, okay. So like this you have to just remember it. Then in gastric adenocarcinoma you're having so many varieties, like like there is tubular adenocarcinoma, okay, parietal cell carcinoma, because parietal cells are stomach, you can remember like this. Adenocarcinoma with mixed subtype, okay. Then papillary adenocarcinoma, micropapillary carcinoma, mucoepidermoid carcinoma, mucinous adenocarcinoma, signature cell carcinoma, polycystic carcinoma, Paneth cell carcinoma. How you will remember these all things? You have to just mug up, because there's no certain mnemonic for it, okay. Yeah, but these 6 things you remember and write at least some 3 to 4 things in this, and that will be sufficient. Then speaking about the etiology, so environmental factors. So when there is H. pylori infection or Epstein-Barr virus infection, then high concentration of nitrates are found in preserved food, okay. This is dietary factor, okay. Smoked foods, यहाँ पे बेंजोपायरिन होता है उनके अंदर, जो कि कार्सिनोजेनिक है. देन एक्सेसिव सॉल्ट, जब आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी इंटेक करते हो, देयर इज सो मच रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा. एंड देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड सी, तभी you can develop gastric carcinoma. And refrigeration can also develop gastric carcinoma. These are all dietary factors, okay. Then low socioeconomic scale, the problem यहाँ पर low socioeconomic status में लोगों को proper nutritious diet नहीं मिल पाएगा, so that they will be lacking fat or protein consumption, और बहुत ज़्यादा complex carbohydrates will be consuming. And then rubber and coal workers, okay. Then host factors. So what are the host factors? These are predisposing precancerous condition, जैसे कि chronic gastritis हो गया, pernicious anemia हो गया, और hydrochlorhydria हो गया. Then partial gastrectomy, जब the stomach is partially, some part is removed, that is partial gastrectomy. And the gastric dysplasia, gastric polyps, adenomas more than 2 centimeters. These are also host factors which are basically predisposing a person to the gastric carcinoma. Meniere's disease, hypertrophic gastroenteropathy, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी हो जाएगा यहाँ पे gastric cells का, okay. And then Barrett's esophagus. These are all the host predisposing factors for the gastric carcinoma. These are just to be remembered, okay. And then certain genetic factors, जैसे कि blood group A, hereditary non-polyposis colon cancer, और familial gastric carcinoma syndrome, mutation in E cadherin gene, and Li-Fraumeni syndrome. तो ये सभी चीज़ों में what you are observing is there is a risk of
there's a risk of gastric carcinoma. Okay, now then speaking about pathogenesis. So how is the H. pylori causing the infection? Chronic H. pylori infection, chronic inflammation of gastric mucosa जो है वो लीड करेगा गैस्ट्राइटिस, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस. दैट मीन्स गैस्ट्रिक जो सेल्स होते हैं ना, पैराइटल सेल्स एंड ऑल, वो सब एट्रोपी हो जाएंगे और लेकिन एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है. देन जिसकी वजह से एसिड एंड पेप्सिन सेक्रेशन कम हो जाएगा और ये बैक्टीरियल ग्रोथ को फेवर करेगा, बिकॉज एसिड वॉज किलिंग द बैक्टीरिया ऑल्सो, बट नाउ दिस हैज़ बीन स्टॉप्ड. सो बैक्टीरिया का ग्रोथ इज़ इनहिबिटेड, जिसकी वजह से नाइट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, और ये नाइट्राइट जो है दैट इज़ कार्सिनोजेनिक. एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अगर फिर से ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऊपर हो रहा है वैसे ही कंटिन्यूस हो रहा है तो म्यूकोसल एट्रोफी भी हो सकता है, और जिसकी वजह से इंटेस्टिनल मेटाप्लेसिया हो जाएगा. दैट मीन्स वन टाइप ऑफ सेल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ सेल, एंड दिस मेटाप्लेसिया कैन फर्दर लीड टू डिस्प्लेसिया and it can lead to carcinoma stomach. This is how H. pylori causes gastric carcinoma. Then there is something called as Lawrence classification, जो कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को 2 टाइप्स में डिवाइड करेगा, इंटेस्टिनल टाइप एंड डिफ्यूज़, और या फिर इन्फिल्ट्रेटिंग टाइप. सो सबसे पहले इंटेस्टिनल टाइप, म्यूटेशंस कॉजिंग इंक्रीज द सिग्नलिंग इन वाया WNT pathway. You have to remember this because of the mutations, right? You have to just remember this. So इस pathway में बहुत ज़्यादा signals जा रहा है इस WNT pathway में. यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन भी हो सकता है. APC एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोली, एंड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो सकता है जीन जो कि एनकोड करेगा बीटा कैटेनिन को, एंड देन म्यूटेशन हो सकता है TP53 में. लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है या फिर साइलेंसिंग अदर जीन, जैसे कि BAX एंटी अपोप्टोटिक का जीन है, इसमें कोई म्यूटेशन हो जाएगा. ये TGF बीटा रिसेप्टर 2 एंड CDK एंड 2 जैसे सेल साइकिल प्रमोटिंग फैक्टर. सो इन सब में अगर म्यूटेशन हो रहा है, so there is a risk of developing intestinal type of gastric cancer. Then HER2 gene amplification. So ये gene amplify हो जा तो अभी भी there is a what do you say risk of developing intestinal type of gastric carcinoma. Then डिफ्यूज़ और फिर इनफिल्ट्रेटिंग टाइप में यहाँ पे ईकैथेरिन इज़ लॉस्ट. ईकैथेरिन इज़ बेसिकली लिंकिंग वन सेल टू दैट ऑफ अदर सेल. सो ये ईकैथेरिन लॉस हो सकता है, या फिर CDH1 जीन में भी म्यूटेशन हो सकता है. ये CDH1 जीन इज़ इनकोडिंग फॉर ईकैथेरिन सेल्स, तो ये भी रिजल्ट करेगा डिफ्यूज़ या फिर इनफिल्ट्रेटिंग gastric carcinoma में. और methylation या फिर silencing of CDH1 promoter. So if promoter is only not active, so how can the gene expression be working? Okay, so this is the Lawrence classification. यहाँ पे intestinal type देख लिया और diffuse type देख लिया. So in the next video I'll be speaking about the differences between intestinal and diffuse type, and how the carcinoma is spread, gastric carcinoma is spread, and what are the clinical features. Okay, so if you like this video, for now please subscribe my channel and do click the bell icon, and please like, share and subscribe, and thank you for watching this video.